Hello. Am I audible? Hello. Hello. Hello, students. Good morning. Am I audible? आवाज आ रहा है क्या? हेलो. हेलो. Hello. Sonia, can you hear me? Yes, sir, but your voice is cracking. एक सेकंड. It's not clear. एक मिनट. अच्छा, रुको एक. अब देखो, अब आ रहा है क्या? हेलो. Yes, sir, we can hear now. सबको पता है ना ज्वाइन करने के लिए? हाँ सर बोला है. सिर्फ 27 लोग अभी तक आ चुके हैं. 5. ओके. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. ओके, जो आएंगे अभी आते रहेंगे धीरे. And I will leave you 10 minutes before because I have another lecture at 9 o'clock. Okay. So hello. Yes, sir. Recording on है ना? Today, as in the last lecture, work energy principle मैंने बताया आपको, basic concept. Okay. Today we are going to deal with the numericals. Work energy principle, numericals. Okay. Numerical problems. And we'll take 3-4 numericals and then we'll conclude this topic. So first, let me. I think you have question bank with you, no? So in your question bank, refer the question number. Do you have this copy? Hello. Yes. Refer the question number 5.2.4. 5.2.4. Hello. Audible, no? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5.2.4 जरा देखो क्या कहता है. And let me draw the schematic first here.
Hello, this is the question, correct? No? Newton block is released from rest. It slides down a rough incline having coefficient of kinetic friction as 0.25. We have to determine the maximum compression of this spring. Okay. Can you see this? Hello. Yes, sir. Now, as per the problem, we are given the stiffness of this spring as 1 kilonewton per meter. Okay. And this block is of 30 Newton. Okay. ब्लॉक का वेट दिया है और ये जो दोनों के बीच में स्पेसिंग है दैट इज गिवन 1600 mm and inclination of the inclined plane on which is kept is given that is 30 degree. Okay. Now as far as work energy principle we have to use here. Okay. We know that this problem can be easily solved using work energy principle because it involves the spring. Okay. So the first step is to identify what are the forces acting on this ब्लॉक्स. ओके, ब्लॉक इज देयर ना, तो हर एक एलिमेंट पे हम पहले फाइंड आउट करेंगे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू सी, कैन यू टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग? लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. हेलो, नाउ see, this is what I can say here. This is the position 1, correct, of the block. Okay, this block is having the weight 30 Newton. Okay, after some time what will happen, this block will just slide down. Okay, and this spring will what? Spring will compress like this. Am I clear to you? Hello. And when this spring will compress, the block will be here. Are you getting me? Hello. Yes. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक इधर आ जाएगा. I can say this is position 1 and this is position 2 for this block. Okay. And now you know that this is what 1 kilonewton per meter. Okay. Means K is given, that is 1000 Newton per meter. Okay. Kilonewton means 1000 हो गया ये. Now I will assume that okay, block hits the spring. Okay, block hits the spring in position 2 is the spring. Okay, and जैसे ही हिट करता है क्या करता है, स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, compresses it by x meter. Okay, assume this as a maximum compression, that is x meter. Okay, now if x is the maximum compression, okay, in position 2, so I need to find out this x. Are you getting me? So I got the two positions, position 1 here, position 2 here. Okay, and now I can find the displacement of this block, okay, between these two positions. Correct? Can I mark these positions? Can I mark these positions? What will be these positions? Can you tell me? See, यहाँ से यहाँ तक 1600 था. ठीक है, जैसे ही ये ब्लॉक स्लाइड हुआ and as soon as it compresses the spring, okay, and I assume this इसका maximum compression कितना होता है, x होता है. This 1600 plus x, correct ना? 1600 means 1.6 meter. Are you getting me? Hello. So the total displacement would be what? Total displacement will be, I think I can write this as 1.6 plus x. Is it clear to you? Hello. Yes. Yes. I will assume this कि इसका maximum जो compression है कितना है, x है. ठीक है, तो ये अभी नेचुरल पोजीशन में था. यहाँ पे इस फिगर में यू कैन सी दिस इज नेचुरल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. नाउ दिस इज अ कंप्रेस्ड पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग. ओके, so this is what the position 2. Now this is 30 degree. Okay, let us complete the free body diagram now. बाकी का कौन कौन सा फोर्सेस आएगा?
Yes. What are the forces remaining? This is 30 Newton. This is 30 Newton. So this will be 30. Okay, this angle will be 30 degree. This will be 30 cos 30. And this will be 30 sine of 30. Correct, no? Right? Yes. Since you know that this angle and you know this, what you know, this angle आपने को पता है, right? So we can find out this, correct? Or if you not find, then also it's okay, no problem, okay? तो कहने का मतलब ये है, मैंने ब्लॉक के पोजीशंस भी दिखा दिए, दोनों पोजीशंस, पहला पोजीशंस यहाँ पे इनिशियल पोजीशन जो दिया था प्रॉब्लम, सेकंड पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, और ये कंप्रेस करने के बाद स्प्रिंग को कितना करता है वो, एंड यहाँ पे आई कैन राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 1.6 plus x. Now I can apply the work energy principle, but before applying the work energy principle, let us look at the forces. What are the forces acting on it? तो अभी यहाँ पे म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है, राइट? म्यू इज गिवन 0.25. तो फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा, करेक्ट ना? Since the block is going downward, the friction force will be this way, correct? And this will be the normal reactions. Are you getting me? Hello? So this will be 0.25 N. Correct? है? Hello? इतना clear है? हाँ सर. Now, according to work energy principle, according to work energy principle, what is the work energy principle? The total work done, okay, total work done from position 1 to 2 is nothing but given as change of the kinetic energy. Okay. Now this total work done में कौन कौन से work done आएंगे? Okay, work done due to all these forces. Okay, तो कौन कौन से forces हैं यहाँ पे? Weight, correct? पहला कौन सा है? Weight. और दूसरा कौन सा है? Yes, friction, right ना? And third component is spring, correct? Spring force आएगा, right? So work done due to weight, work done due to friction, work done due to spring force, correct? Now you can see here, since these weights and spring force are all conservative forces, okay, but friction force is non-conservative. So इस problem के अंदर there is non-conservative force present, that is friction. That's why you cannot apply here energy conservation principle. You can only solve this by work energy principle. Okay. So यहाँ पे आप let us apply now. So this will be given as work of weight, that is mg, plus work of friction plus work of spring, okay, is equal to kinetic energy at position 2 minus kinetic energy at position 1. Okay. Now what will be the work done by the weight force? Yes. यहाँ पे देखो. MG. Yes, that displacement के direction, force is in the this displacement के direction वाला component. So which is that? That is this one, 30 sine 20. So this will be 30 sine of 20, correct? Into the displacement. How much is the displacement? Total displacement 1.6 plus x. Okay. Now since they are in the opposite directions, correct? No, force. They are in the opposite or same directions? I think same, no? Same. Displacement and this is in the same directions, right? No? Hello? So this will be positive work, correct? Plus, what will be the frictional work? Hello? This friction, Negative. this will be my 0.25, okay, into n, that is normal reactions, correct? और displacement कितना हो रहा है? Displacement and force का direction opposite हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? माइनस.
right? This will be minus into 1.6 plus x, correct? This is friction force and plus spring force. Spring force कितना आएगा? Half into k. K is what? 1000 ना? 1000 into x1 square minus x2 square. So x1 is what? Initial deformation, that is 0, correct? And x2 is what? We have assumed that is maximum compression of the spring. So here it will be 0 square minus x square, right? And is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. So final kinetic energy कितना है? बोलो पहले initial kinetic energy कितना है? Starts from waste ना? Starts from waste. So starts from waste means it is 0. And finally कितना होगा? Finally when it will hit the spring and it will compresses. Okay, maximum compression होने के बाद it will come to the halt, correct? तो फिर से ये क्या हो जाएगा? Speed 0 हो जाएगा. तो kinetic energy -1 है. Sorry? 2 - 1 है ना? क्या है? 2 minus? फाइनल माइनस इनिशियल है ना? हाँ तो फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी, तो ये 0 है ना, दोनों भी 0 ही है ना, पहला भी 0 ही है रेस्ट पे, फिर यहाँ पे आएगा, इसको कंप्रेस करेगा और फिर से वो रुक जाएगा ना आके, तो दिस विल आल्सो बी 0, तो राइट हैंड साइड तो 0 ही हो गया ना. इज इट ओके? यस सर. नाउ सी, अभी यहाँ पे एक चीज नहीं पता है, n. ओके, तो n कैसे आएगा? n इज यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम. तो n इज सिंपली व्हाट? 30 cos of 30 डिग्री, करेक्ट ना? फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम यू कैन गेट इट. ठीक है. Now substitute all the values here. X is unknown. Find out that x. What is the value of x? So let me write it on next page. It will be, I think, when you solve this, 30 into 1.6 into sine 30, you will get, you can write like this: 30 into 1.6 plus x into sine of 30 minus 0.25 into 30 cos of 30, because n is 30 cos 30, into 1.6 plus x, okay, plus half into 1000 into 0 minus x square, and that is 0. ठीक है, इसको सॉल्व करो आप. I think you are going to get, you just solve it later, okay? I'm giving you the answer. 8.505 x plus 13.61 is equal to 0 something. This equation ऐसा कुछ आएगा. And when you solve this, you will get x is equal to 0.1737 meter. This will be the answer. Please note down the answer. Hello? Anybody got this answer? This is the maximum compression of the spring. Maximum compression of the spring. Anybody got? Hello? 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 Nobody got? आवाज नहीं आ रही है. हेलो हुसैन, हाँ सर आ रही है अब. आया ना? आंसर आया ना? नहीं आया तो भी नोट डाउन करो, बाद में आप ट्राई कर सकते. ठीक है, आपको ये की कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. बाद में कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हो. ठीक है, सो नोट डाउन. नाउ सपोज इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा कुछ एक ऐड करता था. ठीक है, ये आप सॉल्व करो एज अ असाइनमेंट. मैं आपको देता हूँ, एक्स्ट्रा एक ऐड करता था. समझ लो,
इसमें मैं आपको फाइंड करने को बोलता था कि डिटरमाइन द डिस्टेंस moved, okay, by the block when the energy is released from compressed spring. Part 1. And second मैं बोलता था आपको फाइंड करने को डिटरमाइन, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, डिटरमाइन द मैक्सिमम velocity of the block. Can you solve this? Hello? अगर ये भी होता था तो कैसे करते थे? डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ब्लॉक व्हेन द एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम द कंप्रेस्ड स्प्रिंग. अभी देखो ये ब्लॉक इधर आया, इसको कंप्रेस किया, ठीक है, बाद में ये मैक्सिमम कंप्रेशन आपने निकाला. ओके, नाउ व्हाट इट इज आस्किंग, ये जब भी एनर्जी रिलीज करेगा, ओके, जैसे ही ये फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, दिस ब्लॉक विल बी व्हाट पुश्ड, है ना, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो फाइंड आउट करना है. तो दिस इज इजी ना, यू कैन ड्रॉ, अगेन यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. थर्ड पोजीशन मार्क करो, उसमें से फिर से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करो and you will get that distance. Can you solve this? Hello? Hello? Yes, sir. And this maximum velocity अगर ब्लॉक का निकालना है तो कैसे निकालोगे? मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? यस, हेलो, एक्सेलरेशन 0 होगा तब ना. और एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब देयर विल बी अ फोर्स बैलेंस, ना, बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस, व्हाटएवर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक. ओके, यहाँ पे अभी ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्प्रिंग भी इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा. ओके, और यहाँ पे भी इसके ऊपर पहले से जो फोर्सेस सब बैलेंस होना चाहिए. They should not be unbalanced. Then that time we can say this acceleration is 0. तो उस केस में जब ये आप फोर्स बैलेंसिंग करोगे तो x कितना आता है, वो x से कनेक्टेड जो वेलोसिटी निकालोगे that will be your maximum velocity. Okay, so that you can try as a homework. This both. This is not given in question bank, but I have additionally given it. Okay. Is it clear to you? Hello. Let us take the next 5.25. Problem number 5.25. These are the classwork problems which I am discussing. Okay. नीचे आपका मेंशन किया होता है, देखो यहाँ कौन से क्लासवर्क प्रॉब्लम है और कौन सा असाइनमेंट है, यहाँ पे मेंशन किया होता है. ठीक है, so as per that we are going. Okay. Now here problem number 5.2.5. What it is saying, a collar of mass 10 kg, साइड में डायग्राम दिया है देखो, moves in a vertical guide as shown. Okay, this collar is given of mass 10 kg. Okay, it is vertically इसके ऊपर क्या होगा, स्लाइड होगा ऊपर नीचे. Find its velocity when it passes through position 2. Okay, after starting from rest in position 1. तो यहाँ पे position 1 में rest पे है. Spring constant is given, that is 200 Newton per meter, and the free length of the spring is 0.2 meter. Okay, can you solve this? Hello. अच्छा, ये प्रॉब्लम देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने कुछ बताया था आपको, एक चीज क्या बताई थी? इनिशियल लेंथ के रिस्पेक्ट में लेना है एक्सटेंशन. स्प्रिंग अटैच्ड है तो फिर उसको यस, अब यहाँ पे स्प्रिंग जो है इट इज व्हाट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एलिमेंट है ना, ये यहाँ पे अटैच्ड है, इसको मूविंग एलिमेंट को अटैच्ड है. ठीक है, तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया था नेट डिफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, राइट.
एक मिनट। Now this is position 1, this is position 2. ओके, और यहाँ पे कहीं पे ये दिया है हिंज पार्ट, ओके, और इससे ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, ओके. Again here it is connected to this, okay, and this length is given, that is 400 mm. This is given 300 mm. K ka value is given as 200 Newton per meter, okay, and mass of collar is 10 kg, okay. Starts from rest, V is 0, starts from rest, and free length of the spring is given. Free length of the spring is shown as L0, correct now? 0.2 meter, right? Hello. And this is given, ये वाला गैप जो है कितना है, 300 mm. यस, तो कैसे करेंगे अभी? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एनर्जी कंजर्वेशन? वर्क एनर्जी से तो कर ही सकते हैं, ये तो हमको सबको पता है, लेकिन कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एनर्जी कंजर्वेशन? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? हेलो, हेलो, कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं ना, बिकॉज देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट करेंगे, एक तो इसका वेट कॉलर का और एक स्प्रिंग फोर्स, और दोनों भी क्या है, देखो पहला क्या है, स्प्रिंग फोर्स आएगा, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स एंड वेट, वर्क डन ड्यू टू spring force and weight force, and since both are conservative forces, okay, so we can apply energy conservation principle as well, okay. This is what alternate, this is alternate method, you can do it, okay. तो ये इस पे बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी पहले वर्क एनर्जी मेथड यूज, तो यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल मेथड, okay, according to work energy, W1 to 2 is change of kinetic energy, correct ना? Hello, Yes, sir. yes. Now हमारे पास ये इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो वेट फोर्स और प्लस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, is equal to kinetic energy at second position minus kinetic energy at first position, okay. तो mg तो है डायरेक्ट, that is mass is given 10, so we can directly find out the what work done, okay. 10 into 9.81 into the total displacement, that is 400 plus 300. अभी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा यहाँ पे?
half into k into x1 square minus यस सर। सर और दोनों में पाइथागोरस लगा देंगे। hello hello sorry for the interruptions आवाज आ रहा है अभी hello यस सर। now x1 here x1 you cannot directly take as a what this 400 and 300 okay so for x1 what you will do x1 मैंने बताया था क्या होगा L1 minus S0 ठीक है now what will be the L1 L1 will be the length of this spring in position 1 let us mark this as position 1 here okay this has position 1 and this has position 2 तो अगर एक बार ये पोजीशन मार्क किया तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस ठीक है ये 400 है ओके and this we know that this is 300 so this will be how much 500 0.4 plus 0.3 square that will be I think 500 okay so this will be 0.5 minus the length is given in the problem so point ये आ जाएगा 0.8 meter so this is your net deformation okay at position 1 okay and velocity here is 0 ठीक है second at position 2 so at position 2 what we have x2 is equal to L2 minus S0 now L2 will be again this okay so this is 300 300 so this will be 0.3 plus 0.3 correct now are you getting यस सर। कितना होता है पॉइंट आई थिंक 0.4243 मीटर आता है कुछ देख लेना ठीक है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 0.4243 माइनस दिस विल बी 0.2 सो ये आएगा नेट डिफॉर्मेशंस कितना आता है 0.2243 मीटर आता है आई थिंक ओके और इस पोजीशन पे वेलोसिटी पता नहीं वो निकालना है समझ में आया तो यहाँ पे सिर्फ ये स्प्रिंग के लिए ध्यान देना है बाकी कुछ नहीं स्प्रिंग ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि स्प्रिंग यहाँ पे क्या था इस प्रॉब्लम के अंदर ये ध्यान देना था आपको स्प्रिंग जो था स्प्रिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऐसे प्रॉब्लम में ध्यान देना है आपको ओके नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हाँ वर्क ड्यू टू द वेट फोर्स विल बी व्हाट दिस इज mg ना 10 into 9.81 into displacement यहाँ तक जाना है ना पोजीशन 2 तक so this will be 10 into 9.81 into displacement is what 0.7 correct ना both are in positive directions plus half into k is what 200 into x1 x1 कितना आया 0.3 आया ना square minus x2 0.2243 square right
is equal to final kinetic energy. Final kinetic energy half time mass is 10 into final velocity, that is v2 square, minus half into 10 into initial velocity, that is 0 square. So यहाँ से you can determine v2, right? Are you getting me? Yes, sir. Please note down this answer. This is 3.81. This is 3.81 आता है, ये बाद में देख लेना आप करके, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम में यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना था आपको, खाली ये कि स्प्रिंग जो है it was an integral part and we have to accordingly find the net deformations. Okay. अभी अगर इसको आप कंजर्वेशन मेथड से सॉल्व करते थे तो क्या करते थे? सी यहाँ पे मेथड 2, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. सो कैसे सॉल्व करते थे आप यहाँ पे बताओ? टेल मी. Total energy, according to this, total energy, that is kinetic energy plus potential energy remains constant, na? Am I correct? So this means kinetic energy plus potential energy at position 1 is equal to kinetic energy plus potential energy at position 2. Am I correct? Hello? Hello? Now to measure the kinetic energy and potential energy here, okay. Now potential energy will include, see potential energy में कौन कौन सा potential energy आएगा अभी यहाँ पे? Tell me. पहला तो potential energy will be gravitational potential energy, है ना? यहाँ पे दो टाइप का potential energy आएगा because there are two conservative forces, gravitation and spring. और दूसरा कौन सा आएगा? Spring potential energy, correct? This will be mgh, correct ना? And this will be half k x2 square minus x1 square. Are you getting me? Hello? Hello? Yes, sir. But to find out this h and x2, x1, you need to select some datum here. Okay. तो datum क्यों चाहिए? क्योंकि datum आपको reference point चाहिए. मैंने बताया था potential energy का absolute value is never defined. So you need to select some datum. So that change of potential energy you will get. So here you can take any datum. Okay. Let us select this as a datum. अगर ये datum दिया तो देखो अभी this is position 1. Position 1 पे आपका potential energy कितना होगा? Tell me. That will be 10 into 9.81, correct? Hello? Hello? Yes, sir. Are you getting me? Yes, sir. So this will 10 into 9.81. Okay, कितना हो जाएगा बोलो? Into this जो भी आपका 0.4 है, right ना? और potential energy कितना हो जाएगा? That will be half into this 200 into, yes, net deformation, that is x2 minus x1. ठीक है? Are you getting me what I am saying here? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, पोजीशन 1 पे अगर आपको लिखना है एक्सप्रेशन तो कैसे लिखोगे? सी काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? हाफ इंटू 10 इंटू दिस विल बी 0 ना? ना? हेलो, am I audible? Yes, sir. Can you I simply mean can you solve this by energy conservation principle?
ओके तो इसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और उसको ऐड करना है और पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के लिए आपको इक्वेट करना है। ओके तो ये अगर आपने डेटम दिया तो यहाँ से आप इस वाले पोजीशन के लिए और इस वाले पोजीशन के लिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखो एंड देन यू इक्वेट इट, यू विल गेट द अननोन। ओके so just try, you will get। Okay, that is the modified form of the work energy principle। I hope you understood। Next is see 5.2.6 भी उसी के बेसिस पे है। ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे भी स्प्रिंग इज व्हाट इंटीग्रल एलिमेंट और यहाँ पे भी फ्रिक्शन नहीं है, तो यू कैन अगेन सॉल्व दिस बाय एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके 5.2.7 भी आप एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते। Okay. अच्छा, now next let us take some problem which is like this block का। Okay 5.2.3 5.2.3 can you solve this problem using work energy method? Hello, ऐसे प्रॉब्लम्स आपने किए हैं डीएलएम्बर्ट्स मेथड में। 5.2.3 okay so let me draw here। Hello, can you solve this? How will you solve this using an work energy method? This is P2, this is P1। okay P1 is 4 Newton, P2 is 8 Newton। Okay, so what it says, block P1 of weight 8 Newton is connected to block P2 okay of 8 Newton by an inextensible string। Find the velocity of block P1 if it falls by 0.6 meter okay starting from rest। Nu k is given as 0.2। also find the tension in the spring। so see यहाँ पे tension in the string पूछा है, correct है ना? hello, so when tension in the spring is required to find, so what you will do here, in this case मैंने बताया था you will isolate this block। okay ये block को अलग से isolate करो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और इसका अलग से बनाओ। ठीक है, एंड देन ओनली यू कैन शो द टेंशन। तो इसके अंदर कितना टेंशन रहेगा T, तो इसके अंदर भी कितना टेंशन रहेगा T। okay since they are connected with the same strings so same tensions and therefore their velocities will also be equal। ठीक है ना, that is let us say V। okay right, hello, and the distance covered by both the block will also be same, right? hello, yes sir। so अगर ये 0.6 मीटर कवर करता है सपोज कुछ टाइम के बाद, सपोज ये इसका पोजीशन 1 हुआ, ये इसका पोजीशन 2 हुआ, ये यहाँ से यहाँ आया 0.6 मीटर in some time interval, so in the same time interval it will also cover 0.6 meter, correct? it will also cover 0.6 मीटर। so इसका पोजीशन 1 ये हो गया, इसका पोजीशन 2 ये हो गया। now apply the work energy principle to both the blocks individually okay P2 and P1। you will
get two equations, okay, and two unknowns. समझ में आया? So you can find out. समझ में आया ना आपको कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आप दिखाओगे तो ये ब्लॉक कैसे जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ आएगा. फ्रिक्शन फोर्स विल बी लाइक दिस, ओके. Mu is given 0.2, so this will be normal reaction and this will be 0.2 n, okay. Are you getting me? और Yes, वेट sir. आ जाएगा, वेट कितना आ जाएगा, दैट इज 8, और इसका वेट कितना है, P2 है ना, दिस इज P1, वो आ जाएगा, ठीक है. नाउ फॉर ब्लॉक P2 you can write, okay, work done from 1 to 2 is change of kinetic energy, ठीक है. So work done from 1 to 2 कितना होगा, that is work done due to mg, that is weight, and work done due to friction, right ना, minus k1. So ये कितना हो जाएगा, tell me. जी तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट, 0. because this is moving horizontally. and friction कितना हो जाएगा. अच्छा, टेंशन भी अभी कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हो आप. अगर पूरा सिस्टम कंसिडर किया होता है एक साथ तो दैट टेंशन वुड बी जीरो, ओके. तो वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस कैन बी अज्यूम्ड एज अ जीरो, बट यहाँ पे इंडिविजुअल कंसिडर कर रहे हो ना, so this will not be zero, okay. So tension, okay, and this is moving in this direction, so displacement, that is 0.6 है ना. So this will be how much, t into 0.6. This is position 1, this is position 2. And friction is opposite to the direction of motion, so this will be 0.2 into n. N will be what, n कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलो. N will be exactly equal to 8 ना. 8. So this will be 0.2 into 8 into what, the displacement, that is 0.6, is equal to change of kinetic energy. So change of kinetic energy at position Sir? 2 कितना आएगा. हाँ, सर वो 0.6 दिया है कि आपने अज्यूम किया है? नहीं दिया है ना प्रॉब्लम में, देखो ना यहाँ पे वो बोल रहा है ना 0.6 m if it falls by 0.6 meter starting from rest. ओके सर, ओके. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका C. यहाँ पे वेट दिया है तो वेट इज 8 by 9.81, ठीक है, बिकॉज मास, यहाँ पे मास चाहिए ना, m into v is what, v सेम है ना दोनों का वेलोसिटी, तो v स्क्वायर, एंड दिस इज 0. तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, देखो, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ t एंड v. सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, देखो. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बोलो मुझे. Again you will apply work done from 1 to 2 is equal to change of kinetic energy, that is K2 minus K1. I hope you are getting me. यस तो सर. यहाँ पे दो कंपोनेंट आएगा, वेट का और दूसरा टेंशन का. See, work done by the tension force is always zero, but when you will consider entire system, not individual particle. Okay, remember this. I am repeating again and again. Now this will be, see, weight कितना है 4, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका 0.6 ना. पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. टेंशन, अभी टेंशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, so this will be minus t into 0.6 and is equal to, this will be how much, half into 4 by mass, mass is 9.8. 4, yes, into v square, और ये कितना हो जाएगा 0. 0. तो यहाँ से देखो दूसरा इक्वेशन आ गया,
the unknown, the equation. You can solving equations 1 and 2. We can get P and V. Okay. So I'm giving you the answer. वेरीफाई कर लेना उसको. T का वैल्यू आता है 3.2 न्यूटन एंड V आता है 1.534 मीटर पर सेकेंड. And same problem you solve it by using D'Alembert's principle. Okay, and see whether you are getting the same result or not. Okay. So Sir. exam you will find. Yes. You assumed V1 equal to V2. Assumed नहीं, सेम स्ट्रिंग है ना, सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना यहाँ पे. तो सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये जितना भी आगे जाएगा उतना ये भी आगे जाएगा ना. अकॉर्डिंगली वेलोसिटी दोनों का सेम ही होगा ना. Yes, sir. अगर स्प्रिंग्स अलग रहता था तो फिर ये नहीं करेक्ट होता था, फिर ये रॉन्ग होता था अजम्पशन. ठीक है सर. हाँ बोलो. सर पूरा सिस्टम लेते तो टेंशन का वर्क 0 हो जाता और वर्क डन बाय mg इक्वल्स टू वर्क डन बाय p1 हो जाता ना. हाँ तब टेंशन डिसअपियर हो जाता था पिक्चर में से. लेकिन यहाँ पे टेंशन पूछा हुआ था, इसके लिए मैंने अलग अलग एज्यूम किया. समझ में आया ना. यस क्योंकि देखो ना यहाँ से दिख रहा है ये पॉजिटिव आया और ये नेगेटिव आया, ऐड हो जाता था तो ये कैंसिल हो जाता. ठीक है. हाँ. यस. तो ये ध्यान देना, बस इतना ही वेरिएशन है इसमें और कुछ नहीं. सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. ओके, ये इतना ही मुझे बताना था. सो नाउ आई कैन से दिस टॉपिक इज वेरिएशन इतना ही है और कुछ नहीं है. देखो अभी इसमें पहला प्रॉब्लम भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, इजी है. अच्छा 5.2.2 इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, बट उसमें कुछ डेटा मिस है. ओके वो प्लीज वहाँ पे स्पेसिफाई कर लो. हेलो. यस सर. हेलो. हाँ वहाँ पे म्यू के का वैल्यू नहीं दिया है. यू टेक दैट एज 0.3. ओके, म्यू के 0.3 एंड इंक्लिनेशन ऑफ दैट प्लेन इज 30 डिग्री. ओके, जो इंक्लाइन प्लेन है उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री है. और बाकी वैसे ही है. ठीक है, तो यू कैन सॉल्व दिस बाकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स. ओके, आई विल suggest you to solve this 5.2.3 wala problem by D'Alembert's principle also. Okay, and see whether you are getting the same result or not and how much time you take while you are solving by D'Alembert's principle. Okay, and work energy principle. ठीक है, अभी ये थोड़ा सा इसमें दो ही ब्लॉक था, एक ही स्ट्रिंग था, इससे इसका रिजल्ट इससे भी फास्ट आया. बट अगर कॉम्प्लिकेटेड पूरी अरेंजमेंट दिया होगा तो उस केस में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में भी कॉम्प्लिकेटेड. Maybe, may not, or may be. Okay, so sometime you will find that D'Alembert's principle will be easier as compared to the work energy principle in case of Cooley's problems. Okay, so anyways you can solve. Thing is that कि कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता करना पड़ेगा. ठीक है. Is there any doubt? Hello. 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 नो सर. So I will stop now. Okay. Attendance में एक मिनट देखता हूँ. So here our topic concluded. Okay, पूरा टॉपिक हो गया. अभी आपको डाउट्स वगैरह रहेगा तो आप पूछो, सॉल्व करो, और डाउट्स रहेंगे तो डिस्कस करो. Then again for doubts can meet if possible.
Okay, you can give now. Thank you.